हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीकली एनालिसिस वीडियो। दिस इज सागर भट्ट। इस वीडियो में एज यूजुअल पहले हम निफ्टी एनालाइज करेंगे, उसके बाद अदर सेक्टर्स एनालाइज करेंगे एंड फाइनली मैं आपके साथ दो स्टॉक शेयर करने वाला हूं जो आप अपने ट्रेडिंग वर्कशीट पे ऐड कर सकते हो। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे आप देख सकते हो, निफ्टी हैज अप्रोच्ड इट्स ऑलमोस्ट द ऑल टाइम हाई हियर एंड एग्जैक्टली एट द ऑल टाइम हाई जो रिजेक्शन फेस कर रहा है। लास्ट वीक इट हैज फॉर्म्ड काइंड ऑफ अ बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न। तो अभी देखते हैं क्या हो रहा है। एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू फॉल। माइकल बरी इज सेइंग दैट दिस, बट द ट्रूथ इज नोबडी नोज व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, राइट। तो हमारा जो स्ट्रैटेजी है वी कैन फॉलो इट एंड दैट इज द ओनली थिंग दैट वी कैन डू। बट क्लियरली एक चीज तो गारंटी है कि निफ्टी एज अ होल, द इंडेक्स इटसेल्फ इज ओवर वैल्यूड, राइट। सो वी कैन से दैट निफ्टी इज fairly priced when it's at 100 or 200 moving average. When it's above it, we can say that it's trading above its value. So clearly now Nifty is above its fair value. Talking about the other sectors, अब देख सकते हो Nifty Bank has finally approached its all-time highs. So if you are watching my videos for a couple of months, if you remember me, if you see my previous videos, मैं इस लेवल से बोल रहा हूँ कि this is a very good level to buy and you can see that finally it has reached its all-time highs. तो अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हो, इफ यू आर होल्डिंग, इफ यू आर समवन हु बॉट इट हियर, देन देयर इज अ वेरी गुड टाइम टू सेल इट। एंड टॉकिंग अबाउट अदर सेक्टर्स, निफ्टी एफएमसीजी भी अपने ऑल टाइम हाइज पे है एंड निफ्टी स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स आर काइंड ऑफ रिकवरिंग। एंड अगेन द वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर इज द आईटी सेक्टर। तो आप देख सकते हो आईटी सेक्टर हैज नाउ मेड अ वेरी ह्यूज बेयरिश एंगल्फिंग candle from the 100 moving average and now it might reach the 200 moving average. It is actually a very good news for us. अगर आप देखते हो 200 moving average is a very good long term support for the IT sector. आप देख सकते हो how beautifully it takes support from there. Okay, so अगर आप 200 moving average पे buy कर रहे हो, either the index itself as a whole और आप IT stocks buy कर रहे हो, then if you just hold it for anywhere between 3 to 6 months, then you will be in a huge profit, right? That is what history tells us. So now let's see if IT actually comes to 200 moving average. Now talking about the first stock that looks interesting, of course it is the TCS. तो आप देख सकते हो TCS has broken the 100 moving average and now it is approaching the 200 moving average. So should you enter here? So अगर आप इस लेवल पे बाई कर रहे हो, then don't enter now. Keep a GTT order if you want at the 200 moving average, क्योंकि आप देख सकते हो 200 moving average has been the ultimate long-term support for TCS and now the company is actually approaching there. अगर आप इस लेवल पे एंटर कर रहे हो, then just see this, you are buying TCS at a discount of almost 30%, right? अगर आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हो, then you can enter here. आपका you can either keep a stop loss because ये long-term trading है, or you can just avoid it at a whole. If you are keeping, then this can be a stop loss around this levels and your target again can be the all-time highs. तो आप देख सकते हो your risk is around 7% and your profit is around 45%, almost 1:5-6 risk reward ratio, right? 1:6 risk reward. So this is a good trade. मैं भी यही करूँगा. I am waiting for TCS to come to 200 moving average. अगर इस levels पे आता है, then I am entering. If it doesn't come, then I am not entering. Talking about the next stock that looks interesting, that is the Infosys. जैसे आप देख सकते हो, even Infosys respects the 200 moving average as its long-term support. So it had come back in 2013, it had come in 2017, and even during the Corona crisis it had fallen further, and now again you can see it is heading towards the 200 moving average. तो अगर आप एक इन्वेस्टर हो, एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, this is actually a very good news for you. Finally you are getting an entry in these stocks at a very good level. तो again मैं क्या करूँगा, I will not enter here. अगर आप इस लेवल पे बाई हुए हो, then it's not an issue. You're already entered at good levels. You can keep a GTT order, buy order at this level. अगर इस level पे आता है, then you can enter. And again, you are getting this stock at a discount of almost 35-36%, 37%. That's great. And अगर आप इस level पे entry ले रहे हो, मैं usually stop loss नहीं रखता. If you want to keep, you can keep it at around 11% stop loss, and your target again is the all-time highs, which is around 55% target, right? So these are the two stocks that looks interesting to me. Again, they are not giving entries right away. आपको wait करना है. अगर इस 200 moving average level को आता है, then you can enter.
सो दीज आर टू स्टॉक्स दैट लुक्स इंटरेस्टिंग. कमेंट सेक्शन में बताओ आप कौन से स्टॉक्स वॉच आउट कर रहे हो. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन.